हाय, कैसे हो आप लोग? Especially my class 12 students, those who are preparing for their board exams. I thought let's make one video on their concept of Python Pandas. ठीक है, तो might be your pre-board started or yet to be started. तो मैंने सोचा चलिए Python Pandas पे आपके एक वीडियो बनाती हूँ so that you can clear your concept from Python Pandas. ठीक है, तो let's start with my this PPT. I'll start with my PPT and I'll make some programs also on Python shell. ठीक है, okay. First of all, what is Python Pandas? Python Pandas आपकी एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे functions हैं. All those functions which we can use all these functions in my Python Pandas as a program. If you want to use, you can use all these functions in your Python Pandas programs. ठीक है, इसको करने से पहले you must aware about how to install this Python Pandas as a library file in your Python. ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? You have to install this library file. How to install? As you did it before Python के जितने भी programs आपने किए हैं, library files install किए, same concept you have to do it with Python Pandas also. What you have to do? You have to write pip install pandas. ठीक है, तो आपके ये library file के अंदर जितनी भी functions वो सारे इसके साथ install हो जाएंगे. Fine. Then you can start programming on this. ठीक है. Okay, as I said, what is Python Pandas? It's a library file having so many of functions. Why we use this Python Pandas? To organize our data. जब हमारे पास huge amount में data होता है, उसको proper मुझे formatting करनी है, मुझे manipulate करना है, उसको view करना है, कैसे analyze करना है. This Python Pandas help us in this concept. ठीक है, उसको मैं कैसे देख सकती हूँ? Either I can see it in the form of table. ठीक है, either 1D array, either 2D array. ठीक है, it's up to us कि कैसे मेरे को डेटा को एनालाइज करना है, कैसे मुझे अपने डेटा को एक्सेस करना है. ठीक है, बेसिकली इन द सीबीएसई करिकुलम फॉर क्लास 12 we have two concepts in this. One is series and one is data frames. So these they have shown the data as an they give the name as a data structure for these two terms, series and data frames. ठीक है, तो आज I'll start with the series concept and later on I'll come with my data frames. ठीक है, so first of all, what is series? Series one dimensional labeled data structure. ठीक है, इसके ये 1D array है, as you did it in NumPy, although अब NumPy आपके कंटेंट से हटा दिया गया है, बट फिर भी आप लोग को जैसे NumPy का कॉन्सेप्ट था आपका, सेम एज योर सीरीज का कॉन्सेप्ट भी है. It is one dimensional data structure. ठीक है, data frame आपका 2D array है, as I have written it here also. Series is your labeled one dimensional data structure. ठीक है, how we can show this? See, like this. I have shown it here. I have taken the value 1.0, 2.0, 2.0 and none. Means empty value. ठीक है, and what is this PQRS? These are the index value for these data which I have put it here. ठीक है, तो ये नंबर्स जो मैंने लिखे हैं इसको हम डेटा कहते हैं, इसको हम वैल्यूज कह रहे हैं. ठीक है, इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आई हैव टू गिव सम इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, उसकी पहचान, उसकी इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, ऑल्दो इन सीरीज we can define user defined index value also. User defined index value means कि मैं अपनी तरफ से अपनी इंडेक्स वैल्यू दे सकती हूँ. लाइक यहाँ पे मैंने PQRS लिया है. ठीक है, और P की वैल्यू क्या है 1, Q की वैल्यू क्या है 2, R की वैल्यू क्या है 2.0. ठीक है, S is also having some empty value, so here it is mentioned now. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका आपने NumPy में भी किया था. अगर आपको क्लास 11th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो, उसमें क्या होता था कि हमारे सेम डेटा टाइप होते थे, उसमें भी इंडेक्स वैल्यू होती थी, 0 से स्टार्ट होती थी, सेम. इसमें हम बस डिफरेंस क्या है, इसमें हम यूजर डिफाइंड भी डाल सकते हैं और इनबिल्ट इंडेक्स वैल्यू भी ले सकते हैं. ठीक है, as here it is mentioned PQRS, these are the user defined index value. What is the
मीनिंग ऑफ दिस इंडेक्स वैल्यू मीन्स उसको एक्सेस करने के लिए मुझे उसकी की वैल्यू, दिस इज अ की वैल्यू, लाइक इन डिक्शनरी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन द डिक्शनरी, सॉरी की वैल्यू टू एक्सेस सम द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम द डिक्शनरी, सेम एज वी हैव टू गिव द वैल्यूज इन दिस. ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू यूजर डिफाइंड भी हो सकती है और आपकी इनबिल्ट इंडेक्स वैल्यूज भी हो सकती है. अगर इनबिल्ट होंगी इट विल स्टार्ट विद जीरो वैल्यू, बट इफ इट इज यूजर डिफाइंड तो इट इज स्टार्टेड विद वैल्यू जो भी आप दोगे, either the string value, either numeric value. ठीक है. Second point I've mentioned here, it can store any kind of data type like integer, string or float. ठीक है, अब इसमें हम कोई भी data type use कर सकते हैं, चाहे मैं integer value ले लूं, चाहे मैं float ले लूं, चाहे मैं string ले लूं, any value. In NumPy what we used to do, we have to take the same data type. But then too, I can take any kind of data type. Then too, we have to say series is a homogeneous data type. Why so? I'll let you know when we'll come to the practical part. So I'll let you know why we are saying this is as an homogeneous data type. ठीक है. और data frame क्या होता है? वो 2D array है. उसको हम जब व्यू करते हैं तो we can view that data frame in the form of table, in the form of rows and column. We have to give some field values there and we have to give some row values also. ठीक है, तो it is in the form of table format, so 2D array. So this part we will do it in next video. Now how to define series or how to write the program or how to write the code for series. There are many methods to create the series. ठीक है, one is the series function which I have used it here. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी empty series create हो जाएगी. अब अगर आप कोई भी values के अंदर नहीं देते हो, you are not giving any sort of value, तो it will create an empty series. और उसका data type क्या होता है, float. By default इसका data type अगर आप कोई भी नहीं define करते हो, ठीक है, तो it will take automatically as a float data type. ठीक है, we can create the series with the help of list values. Okay? Either we can pass as a list, either we can pass as a dictionary. It's up to us how we are passing the values or how to create the series. Okay? So let's start the coding section. I'll come to my Python shell. Here it is. See, for that you have to write the name of this library file, import pandas as P. This is the name of the object of this library file. You can take any name here. I have mentioned it A or P, it's up to you. आप कोई भी ले लो. ठीक है, चलो मैंने P से define कर दिया. Now what I have to do? I have to take one variable जिसको मैं series बनाना चाहती हूँ. ठीक है, for that I have to write A is equals to P dot series S capital. As I said, if I want to create an empty series, I have to check whether it is created or not. So I have to define it like this, series A, and let's execute this code. See, it's created now. It's an empty series. The default data type for empty series will be this one. D type will be float. So you float data type आपका लेगा. Okay, and it's an empty series because I have not passed any value in this. Okay, now how to pass the value? There are basically two kinds of arguments we have to give. One is data part and one is index part. As I have shown you in my PPT, there are two sections. One is data section, जिसमें हम data pass कर रहे थे, और एक आपकी index value through which we can access those elements. ठीक है? Okay, let me pass a simple value right now. If I'm passing it some values, so I have to pass either with the list. मैंने इसी 3 values उसमें pass कर दिए एक list के form में. ठीक है, now let me execute this. See, it will take 1 2 3 और इसकी index value क्या है, 0 से start हो रही है. ये default index values है. I have not passed any index value right now, but default index value वो कहाँ से start करेगा, 0 से start करेगा, like in NumPy we used to do. ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है तो यहाँ you can mention data is equals to like this. आप ऐसे लिख सकते हो, in the form of list I'm passing, और दूसरा argument इसका क्या है, index. अब मैं अपना index value if I need to give, means I need to define my own index value. I don't want the default index value like 0 1 2. ठीक है, I can give it here. Say as I want to give the name as an A, then B, then C.
Okay, now let me execute. See, now the index value is as an A ka value 1, B is 2, C is 3. So these are my own index values. I have defined it here. So it will take these values. If you won't define any index value, it won't take this. Okay? It will take the default values as I showed you before. See, 0, 1, 2, and the values are 1, 2, 3. Okay? And it's not necessary or mandatory that you have to give the keyword as in data or index. If I won't write it here, so it will automatically consider as in data. 1, 2, 3 एक आपका data ही हो जाएगा. और इसकी index value automatically it will take it as in 0, 1, 2. Okay? It's up to you how you want to write. Okay? Now, right now, which kind of data type it is showing here? It's integer data type, int 64. Okay. As I said, it is a homogeneous data type. If I'll write it here, say as 1.3, एक values में मैंने float डाल दी, rest 2 values are integer. ठीक है, so which kind of data type it will take now? See, it will take float data type. As I said, series का default data type क्या है? Float. ठीक है, integer से इसका range बड़ा होता है, that's why it's taking as in float. ठीक है, if I'll write it here 1.2. Okay, next value, let me put it here as in some text value. Okay, let me write it, name here, Amit. Now I've mixed some values here. So which kind of data type it will take? It will take it as an object data type. Object data type means mix of values, means इसमें string भी है, float भी है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का आपका जो रेंज है दैट इज बिगर देन इंटीजर एंड फ्लोट्स, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग एज एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. ठीक है, हियर इट इज फ्लोट आल्सो, न्यूमेरिक आल्सो, एंड दिस स्ट्रिंग वैल्यू आल्सो. सो इट विल क्रिएटेड द डेटा टाइप एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, so that's why I said it is a homogeneous data type. Why it's not showing the mix value like float? Because I have passed all the values. That's why I said it is a homogeneous data type. ये एक single data type को concept को पक लेता है. Whatever you have passed, whatever the data type range is higher, it will take that data type. ठीक है, means numeric हो, float हो या string. ठीक है, अगर आपने float pass किया, कोई एक भी value अगर इसमें float आ गई, it will take as in float data type. See, all the values are automatically converted to float. तो उसने सबको, मैंने पास तो सिर्फ एक ही वैल्यू करी थी 1.2, rest my 2 and 3 is integer value, but it's showing as an float data type because it converted all these 3 values in float. Fine. So like this you can pass the values in this. Now if I if I need to pass in the form of dictionary, you said, okay, so let me give it the value, say as if I'll write it here, name. Okay, this will be the key. Okay, and let me give the value here, Amit. Okay, my next value is age. Okay, 23. Okay, now next is say as address. Right. Now if I'll give the value here 45. अभी मैंने सिर्फ only 45 दिया. Now let's see what will happen. See, now the index value change and this जो उसका की का डिक्शनरी की जो की वैल्यू है लाइक नेम, एज एंड एड्रेस, ठीक है, तो वो इसकी इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट हो गई. जो भी की है डिक्शनरी की कन्वर्टेड टू द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, नेम एज एन अमित, एज एज एन 23, एड्रेस इज 45. Fine. So with the help of either with the list, either with the help of dictionary, you can pass the values in this. Okay. Okay. You can pass the scalar value even. If I need to pass, say as मैंने सिर्फ 23 दिया. Now see what will happen. It will take 23 as a single value. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे
if I'll write it here, index, or let me give it here. I want to give 23, 34, 45, 5. And let me pass it in the form of list. Tick. Now, if I need to give index as in A, let me give it V here. Any sort of index you can give. Okay, let me show you first this. ठीक है, A की वैल्यू क्या है 23, V की 34, S की 45. ठीक. Now if I'll write it here, A, I want to access a single element. मुझे इसमें से इस सीरीज में से कोई एक सिंगल एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है. How to access the single element? ठीक है, what you have to do, you have to pass the index value. आपकी जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसकी वो आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी. एंड देन यू कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ दिस V. V की वैल्यू क्या है यहाँ पे? That is 34. So it will show you the value as in 34. एक सिंगल वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है. ठीक, like this. Okay, if I'll write it, for example, let me write it here, the index value L. ठीक है, और ऐसे में 45. ठीक, L is not present right now in my series. The L index value is not there. ठीक है, or if I need to add on any more element in my index, right now I have only 3 elements. If you want to add on any more elements, so what you have to do, you have to give one index value to your series. ठीक है, and like this, and then you can write it here, print E. See, my one L values added to my the old series. जो भी मेरे पास थी values, उसमें 3 values थी right now. ठीक है, पहले मेरे पास 3 वैल्यूज थी, अब मैंने उसके अंदर एक और एलिमेंट को ऐड करना था, दैट इज L. उसकी वैल्यू है 45. नाउ इट इज लाइक दिस, यू कैन ऐड ऑन द एलिमेंट्स. सेम कॉन्सेप्ट आपका है इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन योर ओल्डर वैल्यूज. ठीक है, आप इसमें सपोज मुझे A की वैल्यू को चेंज करके 45 करना है, या एनीथिंग यू नीड टू पुट. लेट मी पुट इट हियर राइट नाउ, एनी टेक्स्ट वैल्यू. ठीक है, अब A एलिमेंट के अंदर मैं एक 23 था पहले. ठीक, अब मैं इस A के अंदर क्या डालना चाह रही हूँ? अमित को डालना चाह रही हूँ. मैंने चेंज करके A की वैल्यू जो कि पहले 23 थी, अब मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया? अमित में चेंज कर दिया. ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन ऐड ऑन द एलिमेंट your the series, or you can make some changes in your older values also. ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू को चेंज करो या कोई एक एलिमेंट को ऐड करो, इट्स अप टू यू. ठीक, ओके. What other things we can do here? As I said, if I want to give some scalar values to my elements, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी? मुझे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैंने कहा I need to change some 2 values together. I want to change the 2 values together. अभी मैंने सिर्फ एक एलिमेंट में मॉडिफिकेशन किया था. ठीक है, I want to add on, make some changes in 2 values. ठीक, तो उसके लिए मुझे I can use the concept of slicing. ठीक, स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या करा? 1:3. ठीक, और let me add few values here. 98, और यहाँ पे मैंने दे दिया E, कर दिया एक एलिमेंट, और मैंने एक एलिमेंट let me add SQ.
ठीक है, तो आई हैव राइट नाउ 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 5 इंडेक्स वैल्यूज आर देयर. ठीक है, आई वांट टू मेक द चेंजेस इन 2 वैल्यूज. फॉर एग्जांपल 1:3. दिस इज अ स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट. स्लाइसिंग में क्या होता है, एक वैल्यू लेस लेता है. ठीक है, दैट मीन्स ये किस में चेंज करेगा, 2 तक लेगा रेंज. इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2. ठीक है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस सीरीज, 0 1 2 3 4. दैट मीन्स 1 and 2 की पोजीशन पे क्या है, 34 and 45. आई वांट टू राइट इट हियर एज चलो 100 मैं प्रिंट करना चाहती हूँ. मैं 34 और 45 को चेंज करके मैं अब यहाँ पे 100 डालना चाहती हूँ. ठीक है, तो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइसिंग 1:3 और इट विल टेक 100 वैल्यू इन प्लेस ऑफ 34 and 45. ठीक, see now in place of 1 and 2 इंडेक्स वैल्यू क्या है इनकी, 1 and 2 की v और s. मैंने स्लाइसिंग मैं क्योंकि टेक्स्ट वैल्यूज पे नहीं कर सकती, आई हैव टू यूज द न्यूमेरिक वैल्यूज. फॉर दैट आई नीड टू यूज द डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू. आई हैव टू टेक द डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज. ठीक है, तो डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्टेड बाय 0. ठीक है, तो 0 1 2 3 4. ठीक है, तो मुझे फर्स्ट 2 वैल्यूज पे चेंजेस करने. तो फर्स्ट 2 वैल्यूज एज एन स्लाइसिंग में क्या हो जाएगी, 1 and 2, दिस वन 34 and 45. इसको चेंज करके मैंने अब 100 कर दिया. सी वी और एस पे वैल्यूज क्या आ गई, 100. ठीक, और आपने प्रिंट 1 कर दिया. ठीक, ओके, like this you can make the changes in this. ठीक, ओके 100 डाल दिया. Okay, what else we can do in this? एक और तरीका है आपकी सीरीज में वैल्यूज को पास करने का with the help of range function. Let me put it the range value here. Range. Let me take the value as in 6. ठीक है, और इसमें से मैं हाँ ठीक, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं. ठीक, देखो मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी, मैं सीरीज में किस तरीके से वैल्यूज को पास कर रही हूँ, रेंज, विद द हेल्प ऑफ रेंज. इवन द इंडेक्स वैल्यू आल्सो यू कैन गिव इट लाइक दिस. ठीक, मैं अगर सपोज यहाँ पे दे देती हूँ 45 78 89. ठीक है, एक ये मैंने डेटा पास कर दिया और इंडेक्स को मैं रेंज में देना चाह रही हूँ. इंडेक्स इज इक्वल्स टू ऐसे. ठीक है, फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, कितनी वैल्यूज है 1 2 3, तो लेट मी गिव इट हियर 3. ठीक, और हमने दे दिया यहाँ पे रेंज की वैल्यू दे दी. एक लेट मी सी दिस. ठीक, देखो मैंने डेटा को पहले पास करके दिखाया था विद द हेल्प ऑफ रेंज. नाउ आई एम पासिंग रेंज इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, कि मतलब इंडेक्स को भी आप रेंज के थ्रू वैल्यूज दे सकते हो. ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन गिव और एक्सेस द वैल्यू with the help of range function, list और डिक्शनरी. तो आप किसी भी तरीके से सीरीज में वैल्यूज को पास और एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, अच्छा चलिए लेट्स कम बैक टू माय स्लाइड. ओके, ठीक है, दिस वी हैव डन. लिस्ट ऑफ वैल्यूज, कैसे वैल्यूज को पास करना है. ओके, हाँ, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 more फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ हेड एंड टेल फंक्शंस. इनका कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत इजी है. कैसे पास करोगे, आपको क्या करना है, एक सीरीज क्रिएट करोगे. ठीक है, एंड देन वट एवर हेड एंड टेल फंक्शंस. ओके, लेट मी डू इट इन this Python shell only, that we can easily understand what is the concept of this. ठीक है, कुछ वैल्यूज हम पास कर देते हैं. यहाँ पे 45 दे दिया.
अमित पास किया मैंने यहाँ पे सपोज, और लेट मी गिव 100, 23.5, 89.5. ठीक है, I'll remove this index part. ठीक, now a dot head. ठीक है, head का मतलब क्या है? There are two functions, head and tail. Head means starting values. आपको कितनी, suppose एक साथ अगर आप कुछ values को access करना चाह रहे हो, although we can use the concept of slicing also here. ठीक है, but there are two other way also to access the multiple values. अभी हमने single values को access करने की हमने देखा था. Now if you want to access multiple values from here, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक हेड फंक्शन यूज किया. हेड मीन्स स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज. ठीक है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो स्टार्टिंग थ्री वैल्यूज क्या है? 45, 78 एंड 89. टू शो यू द स्टार्टिंग थ्री वैल्यूज. ठीक है, 0, 1, 2. इफ आई पास इट हियर टेल. ठीक है, इफ आई राइट इट हियर से एज 4. टेल मीन्स पीछे से, आपकी जो भी लिस्ट है उसके पीछे से जो भी 4 एलिमेंट्स है आप वो देखना चाहते हो. ठीक है, लास्ट 4 values. So for that you can use tail function like this. तो लास्ट 4 values आपको वो शो कर देगा 4, 5, 6, 7 से. लास्ट 4 values is, ठीक है, that is from Amit 100, 23.5, 89.5. So you can see these 4 values with the help of tail function. ठीक, so as many as value you can write it here. जितनी आपकी वैल्यू, सपोज हमारे पास, क्योंकि पांडास का कॉन्सेप्ट क्या है? पांडास का कॉन्सेप्ट है आपका जहां पे आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे उसको स्ट्रक्चराइज करना है, कैसे उसका फॉर्मेट आपको सेट करना है. तो विद द हेल्प ऑफ सीरीज, विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है, यू कैन एक्सेस और यू कैन एनालाइज ऑल दोज डेटा. ठीक है, तो देयर आर मेनी फंक्शंस, मेनी वेज टू एक्सेस द वैल्यूज. Okay, now I was telling about this the slicing function also. With the help of head and tail, you can access the multiple values. With the help of slicing also, you can access the value. Suppose मैंने कहा 1 to 5, मुझे starting की value नहीं चाहिए. 1 मतलब 1 position पे, 0 मुझे नहीं चाहिए. मुझे 1 position से 5 तक चाहिए. 5 means 4 तक चाहिए. एक less लेता है. अगर आपको 5 चाहिए, then you have to define it here 6. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5. That means 100 तक आपको ये values show करेगा. 1 to 5 उसने ले लिया. ठीक है, ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो गई इसकी. और 78 से शो किया. सी फर्स्ट दिस 78 इज ऑन द पोजीशन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5. 100 इसका 5th पोजीशन पे है. तो उसने स्टार्ट 1 से लेके 5th पोजीशन तक आपको वैल्यूज शो कर दी. ठीक है, हेड और टेल में क्या हो रहा था? वो स्टार्टिंग से ले रहा था, स्टार्टिंग टू जो भी आप उसमें वैल्यू पास करोगे. अगर आप मुझे बीच में से कोई वैल्यू चाहिए तो व्हाट टू डू, हाउ इफ आई नीड टू गेट इट द वैल्यू इन बिटवीन. ठीक है, तो उसमें हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. आप सपोज मैं इसको कर देती हूँ नॉट फ्रॉम 1, इफ आई राइट इट हियर 3, तो 3 to 6 लाइक दिस. आल्सो यू कैन एक्सेस द वैल्यू. आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, मैं चाहती हूँ सपोज 2 2, बीच में एक स्किप करके दे. लेट मी राइट इट हियर 7. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, थर्ड से 7, 7 से एक लेस क्या हो गया? 6. बट वो स्किप कितना करेगा? 2 वैल्यू. तो थर्ड 0, 1, 2, 3, 2 वैल्यूज को उसने स्किप करना है. तो 3 पे क्या है? 45. ठीक है, 2 वैल्यूज को स्किप किया 1 and 2, तो अब 100 हो गया. 100 उसने शो कर दिया. ठीक, यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग आल्सो. ठीक है, okay, let me check what else we can do it here. अच्छा, if I'll write it, अभी मैंने ये वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, if a is equals to e dot series series. ठीक है, n, and now if I'll write it here rent a, what will happen?
it will take only a single value. Although मैंने A में आपकी सारी values डाली हुई हैं, ठीक है, but it will take a single value क्योंकि मैंने अब इस P के अंदर एक single एक element मैंने डाल दिया, that is 10. ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन क्या ले लेगा, 0 पोजीशन पे 10 ले लेगा, वो इग्नोर कर देगा पहले वाली वैल्यूज को. ठीक, ओके. What else we have? Let me come to my point. Vector operations. Okay. Vector operations and arithmetic operations. ठीक है, वेक्टर ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन में ज्यादा फर्क तो नहीं है, बट हाँ, लेट मी डू दिस ऑन पाइथन, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. Right now I have, for that I need to give numeric values only for this concept. If I'll write it here, a is equals to a +2. वेक्टर ऑपरेशन मीन्स आप कोई भी इसके अंदर वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, मतलब एक सिंगल वैल्यू को मैं सारी वैल्यूज के साथ ऐड करना चाहती हूँ, माइनस करना चाहती हूँ, और आइदर मल्टीप्लाई, व्हाटएवर यू नीड. तो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेक्टर ऑपरेशन. ठीक, तो इफ आई राइट इट, a is equals to a plus 2, मतलब a में अब सीरीज बन चुकी है, ये मेरी सीरीज है सारी a के अंदर. ठीक है, अब इसमें हर एक एलिमेंट में मैं +2 कर रही हूँ. So what will happen? It will add +2 to all these numbers. ठीक है, let me execute this. See, 45 में 2 add हुआ 47, 78 में 2 add हुआ 80, 89 plus 2 91. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट में 2 add होके यहाँ पे उसने प्रिंट करा दिया. Same concept, if you use it here minus, so it will reduce to value in the given elements. ठीक है, एक बार इसमें मैं, let me do it some only integer value. Okay. Like this, see, पहली वैल्यू क्या 45, 45 में 2 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, माइनस किया तो क्या आ गया 43, 78 में 2 माइनस किया 76, 89 में किया 87, 45 43, 12 minus 2 10, like this. ठीक है, तो these are known as vector operations. Okay. नेक्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस. अर्थमेटिक में अब क्या है, आपके पास कोई सीरीज है. ठीक है, आप सपोज इफ वी हैव 2 सीरीज, हम दोनों सीरीज में से मैं कुछ एलिमेंट्स को माइनस कर रही हूँ. ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अनदर सीरीज, a1 is equals to p dot series. ठीक, and I'll write it here 12, 23, 11, 10. ठीक है, और if I'll do it here, a is equals to a minus a1 and then print a. See, मैंने क्या किया, अर्थमेटिक ऑपरेशन किया 2 सीरीज में. मतलब एक मैंने सीरीज ले ली जिसमें मेरे पास कितनी वैल्यूज है, 3 4 5 6 7 8, और दूसरी सीरीज में कितनी है 1 2 3 4 ओनली 4 वैल्यूज. ठीक है, तो अब दोनों सीरीज को मैं सबट्रैक्ट कर रही हूँ एक दूसरे से. तो 45 minus 12 33, 78 minus 23 55, 89 minus 11 78, 12 minus 10 सॉरी 45 minus 10 35. ठीक है, अब इनमें तो उसने कर दिया, बाकी के लिए उसको वैल्यूज नहीं मिली. ठीक है, तो वहां पे वो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि उससे उसका मैचिंग इंडेक्स उसको नहीं मिला. Whenever you are using arithmetic operations in your series, if the matching index will not be there, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां पे उसको मैचिंग इंडेक्स नहीं मिला, तो वहां पे वो क्या प्रिंट कर देगा, नॉन, एम्प्टी वैल्यू को प्रिंट दे लेगा, क्योंकि इसको मैचिंग वैल्यूज नहीं मिली. तो इट विल शो यू एज अ नॉन वैल्यू जब उसको मैचिंग इंडेक्स नहीं मिलता है. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आप माइनस करो, either you can do plus, let me do it plus now, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. तो 2 सीरीज की वैल्यूज को मैं ऐड कर रही हूँ, 45 plus 12, 78 plus 23, 89 plus 11, 45 plus 10 55, रेस्ट वैल्यू विल बी शोन एज अ नॉन वैल्यू. ठीक है,
इट्स अप टू अस कि कौन सा ऑपरेशन हम कर रहे हैं. इफ आई डू मल्टीप्लाई हियर, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा इन वैल्यूज को. इट विल शो द मल्टीपल आंसर्स ऑफ दिस वैल्यूज. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, कि जिसमें दो सीरीज की वैल्यूज को आपस में वो मल्टीप्लाई कर रहा है, या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा, आइदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, व्हाटएवर यू नीड. ओके, इफ आई गो फॉर और क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. ओके, अभी तक हमने सिर्फ एक्सेस करना सीखा, ऐड करना सीखा. कोई एलिमेंट मुझे इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, कैसे वैल्यूज को एक्सेस करना, आई विद द हेल्प ऑफ slicing. Just hold it please. I think my battery is going. Okay, now if I want to delete my elements from my series, so there are two methods to delete your value. One is your del command. With the help of del command you can delete the elements. ठीक है, suppose मुझे element delete करना है जो कि fifth place value पे है. fifth place value पे क्या है, 0 1 2 3 4 and 5. 100 को मुझे delete करना है, तो I have to pass the index value in del. ठीक है, जैसे एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू को पास करना पड़ता है, डिलीट करने के लिए भी हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू को पास करना पड़ेगा. ठीक है, एंड देन इफ आई राइट प्रिंट ए, ओके, सी नाउ फिफ्थ वैल्यू नहीं है. 1 0 1 2 3 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया, तो फिफ्थ वैल्यू नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू डिलीट हो चुकी है. द फिफ्थ प्लेस वैल्यू इज डिलीटेड राइट नाउ. ठीक है, सेम यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग इवन हियर. 1 से 4 तक की वैल्यू मुझे डिलीट करनी है. लेट मी डू इट दिस लाइक दिस आल्सो. ओके, इनवैलिड. अच्छा, डेल में ये सिंगल इंडेक्स लेगा. ओके फाइन, नो इश्यूज. Like this, fine. Okay, now with the help of drop command also we can use this. A dot drop. Okay, suppose I want to delete 45 from my series. Oh sorry, I have to pass the index value 4. See, fourth value 0 1 2 3 4th. 12th is a dot drop. It's not deleted. What happened? Let me put it here. In place statement, in place is equals to true. Okay, yes, now fourth element is deleted. I have to mention here because it won't delete in the original series. For that you need to use the concept of delete. But if you need to delete the or in original series, you have to use the concept of in place. So in place is equals to true. In place means in the original series you have to delete. So you have to mention here in place. ठीक है, fourth index पे जो भी value है उसको delete करना है. For that you need to use in place is equals to true. So you can delete the value. Fine. Okay, so we have done with this. Let me check what else we have now. Arithmetic operations, vector operations, head and tail. Yes. So I hope your all the concept of this Python Pandas in series is clear now. So let me revise this quickly. Okay, what is Python Pandas? It's a library file having so many of functions which you can use it. We have two kind of data structures, mainly you can say. One is series and one is data frame. Although there is one more term here, it is known as panel, if I'm not mistaken. Okay, but in as I am doing with for class 12 students, so I have taken the concept of only series and data frame, and this video is on series only. Okay, so what is series? It is a one-dimensional data structure. 1D array होता है इसके अंदर, ठीक है,
and here you have only a data section and the index value. ठीक है, what is data section? Where you are storing the value. ठीक है, और उसकी index value. With the help of this index value you can access these elements. कैसे हम उसको element को access करेंगे? With the help of this index value. ठीक है, this is a homogeneous data type. Why it is known as homogeneous data type? Because it will take only the higher data type, whatever you are passing. If you are passing integer, so it will take integer data type. If you are passing float, it will take float. If you are passing string, so it will take string data type. Okay. If you are mixing the values, means you are putting some integer value also, float also, so it will take accordingly. Whomsoever the is higher version, so it will take it as in that form. That's why it is known as homogeneous. डेटा फ्रेम क्या होता है? 2D एरे होता है जिसमें हम अपने डेटा को कैसे व्यू करते हैं in the form of table, in the form of rows and column. We'll do this data frame later on. ठीक है, how to define the series? If you will pass it like this as an empty series, so it will show you this float, because का data type, default data type क्या होता है? series का float data type होता है. Fine. You can pass as in the form of list. You can pass in the form of dictionary also. It's up to you. कैसे आप उसको pass कर रहे हैं? ठीक है. You can define your own index value. ठीक है. Like in dictionary, whatever the key values are there, it will automatically convert it to the index value of these value. Like Sohan का index value क्या हो गया? Name. Delhi का क्या हो गया? Address. 1 2 3 4 5 6 the mobile number. So these are the index value. Fine. Next, how to access the multiple elements from the series? You can use either the concept of slicing, or you can use the concept of head and tail. Head and tail, head means starting values, tail means from the last. As many as number you will pass, it will take those values. Okay. Next is vector operations. Vector operations means आप उसमें कोई भी एक number add on कर रहे हो, subtract कर रहे हो, multiply कर रहे हो, ठीक है? And arithmetic operations, you are using the concept of addition, subtraction, fine, or multiplication with the help of two given series. आप दो series को add करना चाहते हो, subtract करना चाहते हो, either you can do multiplication. It's up to us. So I hope this concept of series is clear to you all. Okay. Do give your valuable feedback on my given mail ID, as you always used to do, and subscribe my channel, share my channel as many as time, or you can share this with the students, those who are means requiring this videos, like unko properly guidance nahi mil rahi hai. So do watch my channel regularly. I'm trying to post a few more videos on Python series. अब मैं data frames के ऊपर एक बनाने जा रही हूँ, ठीक है? उस concept को लेके soon I'll post that video also. So I hope you like this video. Thank you so much.